नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सागर खरबंदा, आपके अपने YouTube चैनल सागर खरबंदा व्लॉग से। पहले क्या था, पहले के टाइम पे जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे ना, तो बटर चिकन, शाही पनीर, ये सब बहुत कॉमन आइटम थी इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर। और आजकल क्या हो चुका है कि इटालियन खाना जैसे कि पास्ता, वो आजकल इंडियन ज्यादा लगने लग चुकी है। और मैं काफी टाइम से पास्ता बनाने का सोच रहा था, तो आज मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि पास्ता बनाया जाए, क्यों ना। और जब बनाने लगा तो आपका ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए, मेरी YouTube फैमिली के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए, ताकि आप लोगों को पास्ता की रेसिपी दी जाए। चलिए आइए बनाते हैं इटालियन पास्ता देसी स्टाइल के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर आफ्टर बॉइलिंग द पास्ता। ओके। और एक खास बात जो कि मैं आपको बताना ही भूल गया, आपके प्यार की वजह से हमारा YouTube चैनल 1K क्रॉस कर चुका है। हमारी अब YouTube फैमिली 1K क्रॉस हो चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि अब हमारी YouTube फैमिली 10K तक पहुंच सके। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile